इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे कुछ कन्वेंशंस आज पढ़ाएंगे, बाकी डे टू डे आई विल कंटिन्यू। एंड द फर्स्ट कन्वेंशन इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCD 1972। तो फर्स्ट हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं ऐसे। इट सेट आउट द प्रिंसिपल्स फॉर वेरियस इंटरनेशनल। फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल इशू, सेकंड इज द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज द पोल्यूशन। एंड सेकंड है कन्वेंशंस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, और इसे UN एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट है एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड असिस्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज, कवर अ वाइड रेंज ऑफ इशूज and implementing agencies for the global environment facility and World Meteorological Organization and UN environmental established the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC in 1988. Third है Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, scientific intergovernmental body है and membership all member of the WMO and UNEP. Reports help understand the risk of human induced climate change. It does not carry out its own original research. It's a voluntary basis. Fourth है conservation of migratory species CMS. Okay, and the Bonn Conventions or Global Wildlife Conference entered into force in 1983. Under the aegis of the United Nations Environment Program, only global and UN-based intergovernmental organization established exclusively for the conservation and management of terrestrial or land, aquatic and avian migratory species throughout their range. And species covered. The convention has two appendix. Appendix first क्या है? Endangered or threatened with extinction. Appendix second, the required international agreements for their conservation and management, not legally binding. India hosted the 13th COP of CMS, Conservation Migratory Species, in Gandhinagar, Gujarat. India has taken over its presidency for the next 3 years till 2023. The theme of the CMS, Conservation Migratory Species, COP13, is Migratory Species Connect the Planet, and together we welcome them home. The mascot for the CMS Conservation Migratory Species COP13 is Gibi, the Great Indian Bustard. It is the critically endangered species. Logo of COP13 was inspired by the kolam, a traditional art for southern India, used to depict key migratory species in India like Amur falcon and marine turtles. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. It is an independently operating financial organization. The Global Environment Facility also serves as financial mechanism for the following conventions: Convention on Biological Diversity, United Nations Framework Convention on Climate Changes, and the UN Convention on Combat Desertification, Stockholm Conventions on Persistent Organic Pollutants, and the Minamata Conventions on Mercury. UNCD Earth Summit 1992, held in Rio de Janeiro, Brazil. The Earth Summit resulted in the following documents: Rio Declaration,
the principle intended to guide countries in future sustainable development. Agenda 21, non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development. Important agreement of Earth Summit, agreement on the climate change conventions, important legal binding agreement. Rio conventions were open for the signature, if open for signatures, and the Convention on Biological Diversity and United Nations Convention to combat desertifications. Agenda 21 क्या है? Agenda is a non-binding action plan for sustainable development. The member 21 refers to an agenda for the 21st century. The aim is the achieving global sustainable development. Since 2015, sustainable development goals included included in the agenda 2030. एंड नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD. द कन्वेंशन हैज़ 3 मेन गोल्स. द कन्वेंशंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान हुई थी. एंड 196 पार्ट और इसमें इंडिया इज़ आउट ऑफ दैम है. और देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं द कन्वेंशन हैज़ 3 मेन गोल्स. द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी and sustainable use of its component, and third is the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. The convention is legally binding. All UN member states with the exceptions of the United States have ratified the treaty. Important protocols, Cartagena protocols and Nagoya Protocols, International Seed Treaty, the Economics of the Ecosystem and Biodiversity. तो ये हैं. और जो भी नगोया प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, कार्टिगोना प्रोटोकॉल और मैडम, इस पर सेशन कर लेते हैं. ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें जिससे ये और लोगों को फ़ायदा मिल पाए. ये एक रिवीजन सीरीज़ है, रिवीजन के पर्पज़ से. एंड थैंक यू.